हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द नर्सिंग एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड नर्सिंग असेसमेंट्स ऑफ अ न्यूबॉर्न विद सस्पेक्टेड सिस्टिक फाइब्रोसिस वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर्स है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है। ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ स्टूल्स, provide chest physical therapy, observe for weight gain, assess the parents' compliance with fluid restrictions, assess the respiratory system frequently। तो पहला जो चीज़ है ना यहाँ पे फर्स्ट है ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी एंड द नेचर ऑफ द स्टूल्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इट्स इनहेरिटेड एज एन autosomal recessive trait causing exocrine gland dysfunction. About 7% to 10% of newborns with cystic fibrosis present with meconium ileus. So, assessing stool frequency and consistency is important. तो इसको हम चूज कर सकते हैं एज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोवाइड चेस्ट फिजिकल थेरेपी। चेस्ट फिजिकल थेरेपी जो है ना वुड नॉट बी इनिशिएटेड इन अ न्यू बॉर्न विदाउट डेफिनेटिव डायग्नोसिस, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो है ऑब्जर्व फॉर वेट गेन। तो assessing weight is important in newborns because they can lose up to 10% of their birth weight and it can take up to 2 weeks for them to regain their birth weight. Okay, तो ये जा सकता है। फोर्थ, assess the parents compliance with fluid restrictions। तो newborn जो है ना, the newborn would not be placed on fluid restriction even if diagnosed with cystic fibrosis, तो ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट है assess the respiratory system frequently। न्यूबॉर्न का जो respiratory system है that should be monitored as often as other infants if the newborn has some or has no respiratory symptoms. Okay, next, which treatment would the nurse anticipate for a 2-week-old boy diagnosed with PKU? देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। There is no treatment or special diet, a high phenylalanine diet, a low phenylalanine diet. The mother would be advised not to breastfeed the infant. Now the first one, that is there is no treatment or special diet. Now PKU is inherited as an autosomal recessive trait. So the enzyme phenylalanine hydroxylase controlling the conversion of phenylalanine to tyrosine is missing over here. So a low phenylalanine diet is the treatment to prevent brain damage. तो ये तो नहीं होगा। Second, a high phenylalanine diet. PKU, as I have already told, it's inherited as an autosomal recessive trait. तो enzyme phenylalanine hydroxylase controlling the conversion of phenylalanine to tyrosine is missing. So that is why a low phenylalanine diet is the treatment to prevent brain damage. So ये भी नहीं जाएगा। थर्ड वन जाएगा जो मैं अभी तक बता रही थी। And lastly, breast milk जो है it has low amounts of phenylalanine, so the mother can breastfeed as long as the infant's level of phenylalanine is monitored. So ये नहीं जाएगा। Next question, which teaching would be important to discuss with the family of a newborn with PKU? Studies have shown that children with PKU outgrow the disease. See, PKU is a genetic autosomal recessive inherited trait. As I have already mentioned till now, phenylalanine is an essential amino acid, which makes it impossible to remove totally from the diet. So treatment is basically a low phenylalanine diet. So individuals do not outgrow PKU. Okay, so that's wrong.
Second, consumption of decreased amounts of protein and dairy products is advised. Now, many high protein foods such as meat, dairy products are restricted or eliminated from the diet because of their high phenylalanine content. तो ये सही है. Third one, high protein and high dairy products consumption must be maintained. हाई प्रोटीन फूड जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है टू स्मॉलर अमाउंट्स और टोटली एलिमिनेट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हाई फिनाइलैलानाइन कंटेंट. तो ये गलत है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एनकरेज्ड फॉर मैक्सिमल न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड. ब्रेस्ट मिल्क कंटेन करता है पीकेयू एंड अगर एक मदर ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं तो द इन्फेंट वुड नीड केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द पीकेयू लेवल्स. तो ये भी नहीं जा रहा है. नेक्स्ट, which teaching is most important for a child with PKU? The child is able to eat a quarter-pound hamburger and drink a milkshake daily. हाई प्रोटीन फूड जो है जैसे कि मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर हाई फिनाइलैलानाइन कंटेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताए हैं. तो ये नहीं जाएगा. If the child wants soda, diet soda is preferred over milk or dairy products. Sweetener aspartame, जिसको NutraSweet equal, this should be avoided because it is converted to phenylalanine in the body. Okay, तो ये भी नहीं होगा. Third, the child may have ice cream in an unlimited quantity once a week. Because of their high protein content, dairy products are limited or eliminated from the diet. तो ये भी नहीं जाएगा. Diet soda or anything with the sweetener aspartame should be avoided. Yes, correct. Artificial sweetener aspartame NutraSweet equal should be avoided because it is converted to phenylalanine in the body. Okay. Next question. Which intervention should the nurse implement for a newborn diagnosed with galactosemia? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है गैलेक्टोसेमिया? गैलेक्टोसेमिया एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है इन्वॉल्विंग एन इनबॉर्न एरर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. जो हेपेटिक एंजाइम है ना, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज, यहाँ पे वो एब्सेंट है, causing the failure of galactose to be converted into glucose. So yes, glucose hence builds up in the bloodstream, which can result in liver failure, cataracts, and renal tubular problems. So treatment of galactosemia involves eliminating all the milk and lactose containing food, including breast milk also and formulas also. Okay. So yes, first one will go because ये कह रहा है कि eliminate all milk and lactose containing food. Second, encourage breastfeeding as long as possible. Galactosemia, जैसे कि मैंने already बताया है, this is a rare autosomal recessive disorder involving an inborn error of carbohydrate metabolism and requires that all milk and lactose containing food, including breast milk and formulas, be eliminated. तो ये नहीं जाएगा. नेक्स्ट कह रहा है encourage lactose containing formulas. अगेन वही बात दोहराया गया है, सिर्फ अलग वे में. Like galactosemia is a rare autosomal recessive disorder involving an inborn error of carbohydrate metabolism and hence requires that all milk and lactose containing food including breast milk and formula should be eliminated. तो ये गलत है. Avoid feeding soy protein formula to the newborn. Galactosemia फिर से मैं बता रही हूँ कि ये एक ऐसा like inborn error of carbohydrate metabolism है जहाँ पे milk और lactose containing food को avoid करना पड़ता है, including breast milk and formulas should be eliminated. So soy protein is the preferred formula. Okay. इसको आप फीड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अवॉइड करना है, तो गलत है. ठीक है.
आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं, डिस्कस करने हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस चाहिए तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे सभी डिटेल्स रिगार्डिंग आवर क्लासेस, वेबसाइट लिंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मेंशन। तो आप जाके वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए कि आपको क्या क्या हेल्प चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए। हमारे यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, देन डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड स्टडी मटेरियल्स वुड बी प्रोवाइडेड टू योर डोर स्टेप. So yes, these are the things that you can get from our institution. So अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड. चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में.